नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपके सामने एक नए विषय के साथ हम अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए। आज का विषय है द रील कल्चर, रील की संस्कृति। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी क्यों कहें, लगभग समाज का हर एक हिस्सा आज रील में उलझ गया है। स्क्रीन टाइम 5 से लेकर 8 घंटे तक का चला गया है। का अर्थ यह है कि लगभग 24 घंटे में 5 घंटे हर एक व्यक्ति आज रील पे होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से। इस रील पे दिखने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी परोसी जाती हैं, कभी पॉपुलैरिटी के लिए या फिर कभी वास्तव में अच्छी शिक्षा के लिए। ज्ञान भी वहां से मिलता है, विज्ञान की भी बातें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसी के नाम पर परोस दी जाती है और हमारे आंखों के आगे से गुजर जाती है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क पर असर छोड़ जाती है। आज इसी असर पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके पहले आज इस डिस्कशन में कुछ खास है। खास यह है कि इस डिस्कशन के दौरान हम आपसे एक क्विज पूछेंगे, अर्थात एक प्रश्न पूछेंगे, और बीच में जब ये प्रश्न पूछेंगे तो आपसे ये गुजारिश है कि उस प्रश्न का उत्तर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजें। सही उत्तर देने वालों की जब एक रैंडमली लॉटरी की जाएगी तो उसमें जिसका नाम उभर कर आएगा उसे 501 रुपए का नगद इनाम उसे भेजा जाएगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, आप इसलिए इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में चलते हैं हम सीधे मनीष सोनी सर की ओर और हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रील कल्चर से उनका भी अटैचमेंट है, तो ये रील कल्चर है क्या और किस तरह से हमारे युवा पीढ़ी को, यदि ये बदल रहा है तो किस प्रकार से। मनीष सर, बहुत बढ़िया ये टॉपिक है और अगर इस टॉपिक पे अलग अलग पहलुओं पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस जो टॉपिक है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स both all is there. If we go towards positive aspects, then we can find that it is very good for new talent. It's a very good for those persons who have lot of talent, but they do not have any kind of platform. So they can show, they can present their talent on this platform, and they can get name, fame. As we have seen that too many persons have got huge name, and they become the real star. They become the social media star. But the negative aspect of this topic is huge, because it's perverting the mentality of the people. As you show that the watching hours is more than 5 to 8 hours per day per person. और ये भी कहा जा रहा है कि आधी आबादी से अधिक लगभग 64% लोग आज सोशल मीडिया साइट देखते हैं और उनको चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये एक बहुत बड़ा ये वेस्ट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं और वेस्ट ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जो IQ लेवल है वो कम हो रहा है, हमारी स्टडी कम हो रही है, हमारे जो अदर एक्टिविटीज है एक्स्ट्रा करिकुलम उनमें हम लोग का इंटरफेयर कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का सर्वांगीण विकास होता था, खासतौर पर जो यूथ है, जो यंग चैप है, उस पर कहीं ना कहीं एक वेट आ रहा है, एक वजन आ रहा है, एक बाधा आ रहा है। एक प्रश्न मैं इसमें आप ही से करना चाहूंगा। वो प्रश्न ये है कि जैसा कि एक मनोविज्ञान बताता है कि जिन चीजों को दबा दिया गया, दब गया, जिन चीजों को उभरने का मौका नहीं मिला, तो जब पहला अवसर मिला तो वो फूट फूट कर बाहर निकला। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जब हमें पढ़ाई पे ध्यान देना था और उस वक्त इस प्रकार का मोबाइल कल्चर शायद नहीं था। तो कई बार ऐसा देखा गया कि समाज में कई ऐसे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उनको टैलेंट को बाहर अभिव्यक्त करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब जब वो थोड़े बड़े होते हैं और अपने जीवन में कहीं जा के स्थिर होते हैं, then they get this opportunity to expose or to display or to display their demonstrate their talent. Now it is one of the ways through which you can always go back to your passion and display your passion to tell to the world that yes you have this. तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकार की आइडेंटिटी क्राइसिस का रिफ्लेक्शन है या पहचान संकट के कारण इस तरह की चीजें हुई? ये दोनों बातें हैं। Actually, sir, as far as the reel is concerned, sir, we can find all kind of reels. We have find some huge talented person who are presenting their talent on this platform, and we are finding some burst person. They are trying to present their
talent, but they are not looking good. They are not tolerable. So I think that all aspect is there, but somewhere or the other, I think that for those persons who have real talent, but due to some problem, because in bygones day, only few persons have right to present the talent. जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो कुछ गिने चुने लोगों का उसमें कब्जा है, वो उनके परिवार वाले, उनके मित्र ही अपना टैलेंट फिल्म इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं, एज एक्टर आ सकते हैं, उसके बाहर का कोई उसमें एंटर करना चाहे तो दे हैव टू डन लॉट ऑफ स्ट्रगल. बट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म द सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, musician and other kind of person, they can show their talent. But sir, as far as the restriction is concerned, I think that these social media side also start exploitation of talent, because they present only those talent who pay them. जो उन्हें पैसा देता है, जो उनको पेमेंट करता है, केवल उनको ही व्यूअरशिप और लाइक और कमेंट्स और वो मिलता है. Otherwise, people are struggling, still. But little bit platform they can get. Right. We'll take this discussion forward, and we have other participants also on this discussion table. These participants are important because they are young participants. They look at things differently. So let's have their view, which is equally important. Sharmeen is the first person. So my views on Instagram. Instagram's platform as a person or user share their views or experience with other people also, and they can connect with friends and family also. So Instagram also users is spending a lot of time on Instagram platform, like 3.69.65 billion people are from India, or our India is from one position and all over the world, and the second is 169.2 billion people are using from USA. So our India is very forwarded to use reels, and the screen time of Indians are 17.6 million hours on a daily basis. Right. So it is very. Do you think हम लोग कि हम लोग फुर्सत में ज्यादा होते हैं? Yes. And this is one of the reasons we have more screen time. Yes, sir. So कहीं ना कहीं ये स्क्रीन टाइम ज्यादा दिखाना क्या अनएम्प्लॉयमेंट की ओर संकेत करता है क्या? Yes, sir. It is also called unemployment. Yes, sir. Or people they are using lots of time and wasting their time on Instagram reels or making and sharing and posting reels. But people should produce their time and produce their self and improving their self, not on wasting time too much. They should progress in their self, countries, and for their. Okay, we have one more participant sitting just next to me. I would like to ask her, what is your view about the reel culture? Sir, I feel like in today's world, real life is more important than real life. People are show offing in real life. They are just sharing some post in real life, and they are in real life they are struggling. But in real life, they are showing that they are living a good lifestyle. Because of it, they are only show off. And now we are living in this world. Only the people is having. No one can live a realistic life. The people are living only a real life. They only a show off in social media sites. And it is not bad that we are sharing some videos or picture. It is good. But when it's convert to addiction, this is dangerous. Because this is dangerous for our mental health, self-esteem. We are comparing each other. There is no emotion in social media. We are just show off in social media. So I think this is good, but this is very, very bad for our generation. And I feel like we are a sad generation with a happy picture. Manish, I'll take this question again to you. As she said that the problem is of comparing. When we compare, so it's causing mental problem also, because in real life we start comparing, we start showing off, we start flaunting, we start exposing. So it creates problem for those who cannot have this. I think we should take it in positive way. Somewhere or the other, we always think about jealousy, but we have to think about envy also. Because somewhere or the other, we have too many motivative, instruction on reels. Somewhere we have too many ideas. Because I remember when I used to young, I have not this much option that what should we do, because I have not this kind of ideas that how to do. Suppose the UPSC exam is going on.
and pupils want to get idea that from where they have to start, which kind, on which level they have to get, information and education. On social media side, there's too many instructors, too many motivators there. They are providing solid material for them. Maybe short video is there, but by this video you can reach up to the link where they get strong Okay, material. that means it can be used as an access to knowledge Definitely. world, not necessarily comparing, and it happens sometimes Yeah, somewhere. because, sir, I but realize that negative aspect is everywhere. yes, If we start from, sir, in Bygone days, there was novel. People want to get knowledge by novels, but at the same time, people are spoiled because of novels. Different kind of novels. The magazines were there, good magazines were there, and vulgar magazines were there. Okay. Now television, we have learned too many things, and we have lost too many yes. things. So we on a platform we have both the things there, good and bad things. It depends on you what to take and where to take. There should be a self-restraint on something. But before we discuss this further, I would like to add some more persons for the discussion. So we have Aditi in the group. So I'll ask Aditi to speak on this. Sir, here we are talking about reel culture. So, sir, when we talk about reel, there is many impact of reels. I can easily call out like social anxiety, negative self-image, sleep disturbance. But what about the hidden dangers? Sir, I would like to talk that reels are destroying the dignity between children and parent, because such parents who are making reels with their little children, they provide every kind of content to them. There is no dignity between the children. Don't know how should they talk to their parent, what should they speak, what should they not, because there is every kind of content given to children by their own parent, and children preparing like this. What can we say, that parent destroying their own old age and their childhood of our children. Right, like parents serving something as food to kids today to show off into the world will later on disturb the parents themselves, because once the children will grow up, there would be a problem. But this is rare, which is we call sharing. It is rare. It doesn't happen very regularly, but yes, it does happen. We'll switch over to one more person for the discussions, and we have Shivam on the discussion table. So as we all discuss about real life and real life, but there is a huge difference between real life and real life, according to me. Because in real life we can't edit our mistakes or success like we can do that in real life. So as you can see, most of the people are too addicted to the reels nowadays. So sir, ओके राइट नाउ ये वक्त है आपके सामने उस प्रश्न करने का जिस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस प्रश्न के उत्तर में आप सिर्फ इसका उत्तर लिखें, अपना नाम लिखें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे जल्दी से जल्दी भेजें। सही उत्तर करने वालों में से किसी एक को 501 रुपए का नगद इनाम भेजा जाएगा। प्रश्न ये है कि ये जो रील है, ये रील फेसबुक के माध्यम से, बाद में इंस्टाग्राम के माध्यम से ये पॉपुलर हुआ मार्च 2021 में। उसके बाद 2022 के बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ, लगभग 150 देशों में ये फैल गया। ना एक बहुत बड़ा इस रील का बेसिक उद्देश्य ये था कि 30 सेकंड में वर्टिकल पिक्चर्स बना के भेजना। इनिशियली आपका प्रश्न ये है कि वह पहला देश कौन सा था जहां ये रील कल्चर की शुरुआत हुई। मैं फिर से रिपीट करूं, उस पहले देश का नाम बताएं जहां रील सर्वप्रथम शुरू किया गया। आपको उस देश का नाम लिखना है और जो नंबर आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप जल्द से जल्दी से भेजें और इनाम पाएं 501 रुपए का। और फिर हर सप्ताह जब हम ये डिस्कशंस करते हैं टेबल पे, तो आपके पास उस विषय से संबंधित प्रश्न हम देंगे। हमारे डिस्कशन टेबल पे अभी एक और पार्टिसिपेंट है और उस पार्टिसिपेंट की ओर चलते हैं प्रियांशु की तरफ और देखते हैं कि व्हाट प्रियांशु हैज टू स्पीक ऑन दिस। जैसे शिवम ने कहा कि रील्स एडिक्शन तो बढ़ता जा रहा है और लोगों को नहीं पता कि उनको रील्स एडिक्शन कैसे हो जाता है। जैसे वो थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाते जाते हैं तो रील्स एडिक्शन हो जाता है। राइट,
अब ये उनको समझ में नहीं आता है इसको कैसे छुड़ाएं। और ये गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि रील्स एडिक्शन हमारे ब्रेन को और हमारी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो हम लोग को इसको मतलब कुछ ना कुछ करके कंट्रोल करना है। नाउ ये जो देखते देखते जो एडिक्शंस बन जाता है, और एडिक्शन बनने के बाद हमारा स्क्रीन टाइम हो जाता है, हमारी हैबिट में आ जाता है। पहले तो हम इसे देखते हैं, फिर इस रील के पीछे क्या ऐसा कोई मंशा छिपी हुई है या ऐसा कोई ज्ञान छुपा हुआ है कि इससे पैसे मिलते हैं? शायद कुछ लोगों को यह भी लगता है कि रील के लाइक्स के माध्यम से और व्यूज के माध्यम से वी कैन गेट मनी, बट हाउ ट्रू इट इज आई डोंट नो. Now we'll ask this question to Sharmin. Sharmin, do you think there is something money is involved behind this? Yes, sir. Yes, sir. There is money involved behind this because so many people lost their employment because of reels. So they find their employment in reels. So they're making the reels like mini blogs, and they share their lifestyle, fashions, and promote their products. And they collaborate with companies and brands. So they get they get money. Okay, Yashasvi, would you like to say something? How do we earn out of reels? Sir, I think there is lots of people on social media who share talent, and I feel like yes, it has more money because lots of people are doing hard work through reels, through embrace their talent, and they are doing for his employment, and lots of people are earn money through social media. Manish, what is your view? Do you think reels make us rich? I think, sir, it's not very true because my personal experience is something else. My personal experience is that when you get name, fame by reels, so there's certain restriction is there. They ask from you some money to give you blue tick, to give you some more, more space And more viewership. Viewership also. People buy viewership also. Yeah, definitely. So, sir, I that's my personal experience that earning money is not a real thing, but spending money is a real thing. Okay, to pay for that, for getting some name, fame, and other things. Yeah, but there is one more important question which I would like to place across. रील का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं या करें कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है, जिस टैलेंट को हम डिस्प्ले कर सके, दुनिया के सामने ला सके. हम पढ़ाने में अच्छे हैं, हम गाना गाने में अच्छे, हम डांस करने में अच्छे, शायद कुछ ऐसे टैलेंट का हिस्सा जो किसी के निगाह में पड़े और आपको वहां से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. लेकिन क्या ये सच नहीं है कि रील के नाम पर पॉपुलैरिटी पाने के लिए कई ऐसे लोग हैं, लड़के और लड़कियां भी, जो अश्लीलता परोसते हैं? इसके विषय में आपका क्या कहना है? क्या आप ऐसी चीजों को कंडेम करते हैं? अदिति एंड देन शिवम. Aditi first. Yes, sir, it is true because our youngster ruining their young age by providing vulgarity, nudity, and crime also. Sir, we have a saying that ideas become thoughts and thoughts become actions. When you see such stupid content, your awareness shifts to that stupidity. That content. You start thinking about that only. Yes, sir. And you action like that. So, sir, and one more thing I would like to mention that reels are promoting street education, like very good. Street education, like we see that one video is made about English and math tricks and uploaded on reels. Sir, now which subject we used to learn in schools and colleges 2-3 hours, so how can it be possible that ये एक नई बहस निकल के आई मनीष, और इस बहस पे हम अभी ये दिमाग में आई ये बात कि रील्स में नॉर्मली अधिकांशतः वैसे लोग वो चीज परोसते हैं जो उनके पास होती ही नहीं. डांस के बड़े फॉर्म देखे जाएंगे, लेकिन जेंडर डांस करने वाले, कथकली, भरतनाट्यम वाले रील्स नहीं दिखती, लेकिन जितनी अश्लील डांस होती है उनकी रील्स दिखती है. पढ़ाने वाले वो लोग पढ़ा रहे हैं जो लोग कभी जिंदगी में प्रॉपरली पढ़े नहीं, लेकिन पढ़ा सब रहे हैं. इतिहास सब पढ़ा रहे हैं, धर्म सब पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सब पढ़ा रहे हैं, बट इन द नेम ऑफ इंग्लिश इफ यू आस्क देम वन क्वेश्चन दे वुड नॉट बी, दे हैव बीन परफॉर्मिंग. क्या ऐसा है कि ये स्यूडो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमें? Actually, sir, we are following reels blindly. We are not trying to find out that what is the real science behind the reels. I think reels is the way of a promotion. Some solid persons, some moneyed persons handling the all social media sites.
have you ever realized that whenever any film about to come, certain that the actor of this film become the hero in reels. Different kind of aspects. Suppose there's a film about to come of Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. So suddenly you will find that Shah Rukh Khan's numbers of reels is increasing. We are finding the different kind of aspects. We are finding different kind. It's a kind of promotion, sir. Basically, it's a promotion. Yes. It's a promotion platform that we are doing. Definitely. Okay. इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें बड़ी खुशी होती है ये बात को बताने में कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने अपने वीडियोस हमारे पास भेज रहे हैं। इन वीडियोस में कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं जिनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियोस आए हैं कनक के, कंचन के, अरुणेश के, पूर्णिमा के और निशिता के। इन वीडियोस को देखें और इन बच्चों के विचारों से भी आप अवगत हों। So real life means an imperfect part of person's life, while real life means in front of camera and mobile. We can know that today most of the people make many types of reels, and we know that real life have two impacts. First impact, positive and negative. As today real impact, real life means some reels teach us good, but some reels do not teach us good. So it is necessary to make good reels. Thank you, sir. My name is Nishita Jain and my topic is what is the difference between real life and real life. If we can say about real life, so what do you mean by real life? Real life is a life in which I live every day. Real life is a world, and we live in every day with world problems. And what do you mean by real life? So real life is a addiction of one's life in online, in movies, TV shows, and is very different from real life. And while TV and movies were the primary sources of on-screen entertainment, and social media redefined real life for not just celebrities but also ordinary people. Today access to social media platforms allows access to protect their real identities, and I can say that in real life people forget our real life, and in this time we can say that all pupils are the all pupils like real life because in this things I always see that all pupils, children, young people, old people, all people in the world is always the addiction of real life. And if we can say about real life, so real life is a dangerously and addiction of our life. And if we can say about real life, so real life is good for our life because in this life both physical and mental activities are going on, and physical activities is very good for our health, and there are many activities are going on in real life, so real life is very good for our health. Real culture impact real culture. As much as I know and whereas I seems, otherwise I think so, real culture has great impact on real culture. Everything has 2 points, negative and positive. So real culture also, as real culture means the films, the movies which we see, so they not directly impact on our real life, but they have a very great impact on our real life, that we can see rape, murders and so many things, violence, etc., which we can see in movies, and then they impact our real life. So this is the very negative impact of real life in real life. We can see there are so many positive impacts also, that we can make reels for their gain, for their profit. So I want to mention here one thing, that real life today most of the people makes reels, and it has also greater impact on the children's life also, because today we can see that most of the children sees reels whenever I know, where as much as I know, most of the reels related to study, to their food items, to their cooks,
but most of the reels had a very negative impact on everybody's minds, which is related to violence, which is related to rapes, murders, and so many bad things. So there also a great impact, but in India, reels has most great impacts than positive impacts. So and it is also on real culture. So at last, I want to mention here one thing, that real culture is a very good culture and it is also a profit for everyone, but there is also a negative impact on real life. So if we want a good real culture, then we should not make some bad reels which impact everybody life. We should have to make good reels. So first I want to talk that what is the difference between real versus real life. If we talk about the real, then in real, person act in front of them. In real, person act in front of another person. So means the perfect means of real life is the depiction of a perfect life online. The real word comes from the camera reel. And if we talk about that real life, then it is very good, because in real life we struggle and we live the right way of our life. Today most of the people mix, because they can profit from mix. They get money and another things, they get more subscribers, and most of the people follow such persons who make reels, and person who follow the such type of person who make reels, they also make reels. So if we talk about that, what is the real difference between real and real, then it is becoming real life in real life. So we know that everything has two impacts, one positive and one negative. So first I want to tell the negative and positive impact of real life. So if we talk about the positive impact of real life, then the positive impact of real life, but most of the positive impact of real life is that people who make reels, they get money, they get many friends, they get many subscribers who follow people who make reels, and they also get some popularization, because who person who makes reels, they popular in their field. And if we talk about the negative impact of real life, then there are many impacts of real life. In real life, we see movies and we see films. I am not saying here that movies impact the person, but in movies we see that there are many violence, rape, extortion, murder, dacoity, robbery, etc. So there are many impact of a real life. The real life is a pseudo life, and the person who is showing the reels, they only want to show what they want to show, and this is the main thing which is a major difference between the real life and the real life. And there are many advantages of the real life, which are, if the person have their talents, they can show on a reel and become popular in front of every people. But there is a major disadvantage of the reel, because if the person became addicted by the reel, they always scroll the reel and waste their time. They don't work on their own future, and this is a major disadvantage of the real life. And if the person is in a real life, they will absolutely destroy their future, and they cannot achieve their dream. And this is the main reason that real life is not so good as compared to the real life. If the person is living in a real life, they can absolutely gain their aim as well as their success. And if at the same time the person who is talented, that is, the reel is so good for them. Shivam,
what is your last statement on reels? So I can give an example. Yeah. Sir, how people creates their own high expectations about their success or sir, real life. Sir, suppose a guy goes to the gym and he successfully builds their body and posted this on reel. And if someone sees their reels, and sir, he creates their own high expectation that he can also build that body without any hard work in a one day. Okay, true. This is one way. Anything, Priyanshu, you would like to add to this whole reel culture? यस सर, रील्स हमारे लिए तो बहुत ज्यादा हानिकारक है, yes. होती जा रही है। और जैसे हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि हमें बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी कुछ काम करने ये एक तरह से शॉर्ट टर्म सक्सेस का लोग माध्यम समझते हैं। Any final comment which Yashasvi would like to give? Sir, I want to say that reel has two aspects, positive and negative. But now our generations has, if हमारी जनरेशन पहले अगर फ्री रहती थी तो हम खेलने वगैरह बाहर जाते थे, लेकिन अभी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। दिस जनरेशन इज ओनली स्क्रोलिंग एंड वेस्टिंग अवर टाइम, तो उन्हें फिजिकल एक्टिविटी लाइक खेलने वगैरह नहीं मिला, तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर जनरेशन। Any final comment from Shameen? So people and parents also involve their children to like physical activities, and they should involve their children to learning their new skills and not using phone too much. So they should stop. Okay, watching Manish, your reels. final comment. Sir, my comments only for youth. I would like to give one example that there's a days एक कहावत है बुंदेलखंडी में कि जाके पाँव फटे ना बेमाई बाका जाने पीर पर आए। अभी तक रील में जो परोसा जा रहा था उससे हमारा पूरा कल्चर बर्बाद हो रहा है, इस और कोई ध्यान नहीं था। लेकिन जब ये इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ने लगा तो न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है, यूपी गवर्नमेंट ने इस पे सोचना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद सोचना पड़ेगा कि रील्स देखिए आप, मनोरंजन का अच्छा साधन है, अपने टैलेंट को दिखाने का अच्छा साधन है, लेकिन वहाँ पर खुद की सेल्फ सेंसरशिप भी होना चाहिए कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। इस डिबेट को, इस डिस्कशन को एंड में लाते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि अभी अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना कि सेल्फ सेंसरशिप, सेल्फ रेस्ट्रेंट, हमें खुद ये बात को डिसाइड करना है कि आप परोस रहे हैं और मुझे क्या देखना है। दूसरी चीज ये है कि रियल लाइफ से उठाई हुई चीजें हैं जो रियल लाइफ बन जाती है। ये है रियल लाइफ की चीज, हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सारी रियल लाइफ की चीज है। इस रियल लाइफ को हम लार्जर देन लाइफ साइज के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है हमारी रियल लाइफ। कोशिश करें इस रियल लाइफ को रियल लाइफ के करीब रखें, इससे व्यक्ति का भी विकास होगा और उसमें हमारे किसी भी प्रकार से तनाव मुक्त जीवन भी हम जी पाएंगे, क्योंकि रील का असर समाज के मानसिकता पर पड़ रहा है। इस बात की ओर ध्यान देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, इस डिस्कशंस को यहाँ क्लोज करते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। प्लीज वॉच अस एवरी संडे ऑन बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हम हमेशा संडे को कोई ना कोई कार्यक्रम और बहुत जल्दी और भी नए कार्यक्रमों के साथ, शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।